बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा ईद उल फ़ितर से मुताल्लिक़ है। इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने ईद उल फ़ितर के कुछ अहम पॉइंट बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फर्स्ट पॉइंट इज़ Eid is the most important festival celebrated by Muslims. The second point is the festival is celebrated with great joy and happiness throughout the world. The third point is the festival of Eid celebrated after the holy month of Ramadan. The fourth point is after Ramadan, when the new moon is seen, the next day Eid ul Fitr is celebrated. The fifth point is on the day of Eid, Muslims wear new clothes. The sixth point is they wish one another by saying Eid Mubarak and share their loves and affections for one another. The seventh point is people make delicious sweets in their homes and distribute them to their neighbors and relatives. The next point is people do charity for who are poor and needy on the day of Eid. ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ईद उल फितर से मुतालिक जो यहाँ बयान करना मकसूद थे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक ताला हमें शरीयत के अहकाम पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।